एग्जाम डे के दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जैसे अच्छा, आपके एग्जाम देने लिए वाले दिन। आपका कोई देख रहा है, जब वो कैट से पहले देखने जाएगा तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? I would suggest that take a good sleep. It is very important. So, what I did was I slept the previous day, whole day, and हम्म। then I also slept at night. So, I am a very heavy sleeper. हम्म। So, I would say that I slept, took a good sleep. And another thing that if you have first slot, then it is okay. हम्म। If you have second or third slot, don't panic that paper easy आया, medium आया, hard आया. My slot was slot 3. I took impressions that how the paper is, but then I did not like totally engage in it. That how is the paper is, and then getting to know all the questions. I was like, अच्छा ठीक है, paper medium है, कर लूंगा मैं. Easy है, कर लूंगा मैं. So it was like that. Stay calm, stay focused, and believe that if you are scoring in mocks, if you are scored well in mocks, then you will do good in CAT finals also, because there's nothing different. एग्जाम पेपर आपके सामने आया, मैंने एक और लास्ट ईयर एक इंटरव्यू लिया था, वहां पे स्टूडेंट का कहना था कि आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर देके भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट? Correct. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? लेट्स इन केस आपके हाथ में कैट का पेपर था, सो व्हाट वाज योर, देयर आर क्वेश्चंस जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, पॉइंट मार्क्स आपके सेम है, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो आपका कैसा अप्रोच था? तो सबसे पहला सेक्शन क्या होता है? कैट एग्जाम में तीन सेक्शंस होते हैं, वीएआरसी, एलआरडीआई और कॉन, हम्म। और तीनों एक ऑर्डर में ही आते हैं. लाइक 40 मिनट्स यू विल गेट फॉर वीएआरसी एंड यू कैन नॉट स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन. हम्म। देन एलआरडीआई कम्स 40 मिनट्स, you have to stay in that, and 40 minutes cons the last section. So section selection is not a thing in CAT exam, unlike JEE exam. So what happened is my strategy in VARC was that मेरे को पूरा क्वेश्चन करना ही करना है. So one incident happened with me in CAT exam, that beside me one student was sitting and he was like kind of a disturbing element for the whole class. हम्म। So in the month of November, he was like switching on the fans and then disturbing the invigilator, disturbing me ki bhai, in the middle of the exam. Then after 10 or 20 minutes in the VARC section only, he left the exam by making some excuse to the invigilator, I don't know, and then he went away. So that was some disturbing factor for me. But then, so my first 10 minutes was completely like I was not focused because of him. After that कि नहीं भाई करना है, final exam है, I started focusing, and then that hampered my overall score in VRC. But then I did it. I did the entire paper. और जो नहीं हुए मेरे लास्ट में दो तीन क्वेश्चंस नहीं हुए, तो मैंने वो पूरा ही मतलब तुक्का मार दिया उसमें. वो नंबरिंग वाला क्वेश्चन होता है. जब और भी तो नेगेटिव का थॉट नहीं था दिमाग में? नेगेटिव वो रहता है ना, इंटीजर टाइप ही डोंट हैव नेगेटिव. फिर एक और मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि लेट्स इन केस, ये तो पता है कि हर सेक्शन आपके पास फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तीनों सेक्शन एक टाइम पे नहीं है. अगर आपको लेट्स इन केस आपके पास एलआरडीआई का सेक्शन आया विच इज लाइक 40 मिनट्स का टाइम, तो उसमें ही सेड कि सबके मार्क्स सेम है, यू कैन पिक दोस क्वेश्चन जो सबसे कम टाइम टेकिंग है, एंड इट वाज लाइक दिस क्विक. सो डू यू थिंक दिस विल हेल्प? बिकॉज आपका टाइम भी आपको मैनेज करना है, आपको सॉल्व भी करना है. व्हाट सेक्शन सिलेक्शन, यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन सेक्शन के अंदर के क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ. क्वेश्चन सिलेक्शन. यस. तो हाँ, ऐसा है that first of all I would suggest that what you do is you skim through the entire paper. Skimming, like some questions are very easy that you will see and do it. So do those questions. So make 3 iterations of your paper. First iteration is go through the paper. Like let's talk about cons, because it is like cons has solvable questions that will. So some questions are very easy which you'll see and solve. So do that. Do those in the first iteration. So out of 22, maybe 5 or 6 questions are very easy. Then come to the second iteration. So second iteration is those questions which need some calculation or which need some paperwork, but you can do it. You know the concept. So do those questions in the second iteration. And the third iteration is that one which are very difficult questions or very calculative questions. So leave them to the end, because if you spend time at those questions, if you'll take a challenge that no, after first question I will have to attempt the second question unless I won't move to any further questions, so that will hamper your overall score. So if you have done the iteration thing, then you have some questions in hand which you have already done, so वो burden कम हो जाता है. और at the end of the paper, last 10 minutes, you can attempt difficult questions, so you can give time on that. So that is my strategy for cons, and VARC and LRDI follows the same. So, I just want you to complete first, then we'll. LRDI में I was talking that you have 5, this from last year we have 5 sets. So I would say that go through, give your first 5 to 6 minutes reading those sets, or maybe 10 minutes also. Give your 10 minutes reading those sets. Read the set, you'll get an idea whether you are able to solve it or not. Then in the 30 minutes, you attempt those sets. If you have done 2 sets completely, you are good to go. You are above 95 percentile. If you have done 3 sets, you have above 99 percentile. So that is the approach in LRDI. And VARC, it is very dependent on people to people, like individual. कट शॉट एक बहुत छोटा सा, कि आपके हिसाब से क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए लास्ट 3 मंथ
में जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके परसेंटाइल इफेक्ट करते हैं? लास्ट लास्ट 3 मंथ्स में, सिटिंग इन सितंबर में, जस्ट अक्टूबर नवंबर, तो ये लास्ट 3 मंथ्स में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन? I would say people like they focus on completing the syllabus, and I told you syllabus कभी खत्म नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में किसी का भी सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है पूरा. So do not focus that मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस पे मास्टरी हासिल करनी है. मास्टरी हासिल नहीं होगी until and unless you sit in the exam environment and you start giving PYQs and mocks. So वो चीज अवॉइड करना. Second thing is consistency and under confidence. So stay consistent that you have to spend 2 to 3 hours every day. Now it's just a matter of 3 months. So stay consistent, and underconfidence is something which I see in a lot of my friends who are also preparing for CAT this year. So they are very good. Their IQ level is very good, but they're not very confident. So stay confident that you can do it. And this is like the last 3 months take. क्योंकि अब 3 महीने में ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है कि बहुत ड्रास्टिक. अब हम बात करते हैं, वैसे मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर हम 2025 की बात करें तो इट्स वेरी डार्क काइंड ऑफ ईयर. आई मीन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपको बहुत सारी इंसाइट इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, बहुत सारी जगह मिलती है कि स्टूडेंट्स हैव सफर्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट. एंड इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है सिर्फ टियर 2 कॉलेजेस में ऐसा हुआ, टियर 3 कॉलेजेस में ऐसा हुआ, इंक्लूडिंग टियर 1 कॉलेजेस. राइट. एंड ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एमबीए को लेके कि आने वाले टाइम में एमबीए की उतनी हाइप ही नहीं बचेगी. इट विल बिकम अगेन अ थिंग लाइक इंजीनियरिंग, व्हिच इज लाइक लोग सोच रहे हैं कि ठीक है कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं है. एंड हम अगर देख रहे हैं तो एवरी सिंगल डी स्कूल इज इंक्रीजिंग देयर फीस स्ट्रक्चर लाइक एनीथिंग, तो जिसके वजह से काफी ज्यादा प्रेशर भी है. You have to get that ROI also when it comes to the kind of investment you're making for your education. So Right. definitely, when you was getting into these colleges, you must have also researched, must have gone through all these posts जो आपको सोशल मीडिया पे. तो आपको क्या लगता है क्योंकि अगर हम देखें अभी के टाइम पे तो ग्लोबल मार्केट भी उतना अच्छा नहीं है. यूएस की वजह से आईटी इंडस्ट्री काफी इम्पैक्ट हुई है, जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बाकी सारी इंडस्ट्रीज में. कई सारी बड़ी कंपनीज में 14 15 हजार ले ऑफ किए हैं. तो ऐसी सिचुएशन में एमबीए कहाँ स्टैंड आउट करता है, एंड वेदर इट रियली मेक सेंस टू गो फॉर दीज एमबीएस? नाउ वी हैव these lot of tools, AI से related softwares हैं या short term courses हैं. क्यों MBA क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? My short answer would be that yes, MBA is still relevant, and MBA is not a type of course which is very technical or which artificial intelligence could do, like you told. So MBA is a course which overall improves your personality, your everything, and your analytical, cognitive, every skill, your thinking also. So MBA is not irrelevant, I would say. But talking about the job market in 2025 or maybe a year or so, I would not talk about other colleges, but here in IIM Bangalore, job market is not affected. Companies are still willing to hire us candidates from IIM Bangalore, and it is still not affected. I would not say about any other college, be it IIM Ahmedabad or Calcutta. I don't know what happens there, but from tier 1 IIM Bangalore, it is very strong and it is very much relevant. The coursework and the curriculum which we are taught in MBA is very much relevant in the industry, and which I would say is not replicable by artificial intelligence at this point of time, because I have my courses here in IIM Bangalore. So some of the questions even ChatGPT is not able to answer. So what happened is there was a non graded quiz in IIM Bangalore in my turn 1. It was a few weeks ago. So what we did is we put that quizzes questions on ChatGPT, and every other answer was different in ChatGPT. So it was an objective question for organization behavior. So every different answer for different ChatGPT prompts were different. So my answer, what my ChatGPT gave me was option A. My friend's ChatGPT gave option B. So that was not doable by ChatGPT, and I would say that the curriculum here in IIM Bangalore is very good, very comprehensive, and very much relevant to the industry.